नई दिल्ली से उठी वैदिक चेतना की लौ अब पूरी दुनिया में प्रकाश फैला रही है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में जुटे 40 देशों के प्रतिनिधियों ने एक ही संदेश दिया: सत्य, एकता और मानव कल्याण। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की एक 150वीं वर्षगांठ पर वैदिक विचारधारा के नवजागरण का यह ऐतिहासिक संगम बन गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप से आए संतों ने कहा, आर्य समाज कोई पंथ नहीं बल्कि मानवता का आंदोलन है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आओ हम विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। उस 150 वर्ष को कमेमोरेट करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन एस्टेब्लिश किया गया, इसको होस्ट किया गया और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी आर्य समाज की यहाँ प्रेजेंट है। 40 देशों से यहाँ लोग आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। 2, 2.5, 3 लाख लोग आपको 4 दिन में दिखाई देंगे। मंच से कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया, आर्य समाज की रेलेवेंस, कंट्रीब्यूशन बताई। यहाँ एक बहुत ही सुंदर एग्जिबिट हॉल, पॉपअप म्यूजियम क्रिएट किया गया है जो पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की और जो भी हम इन सर्विस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं उसकी एग्जिबिट्स लगाई। और एक ये आर्यों का मेला है टू शो द वर्ल्ड दैट आर्य समाज इज अ रेवोल्यूशन, इट्स अ मूवमेंट and it is ready to solve the world's problem today. As योगेश जी, आप थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस वाली बात थी जो उनके projects that you would have heard, that is was founded by the Arya Pratinitis of South Africa, was known as the Arya Anahat Ashram or Aryan Benevolent Home. This institution was founded over 103 years ago, when the leaders of the Arya Samaj back then, in a country where apartheid was rife and oppression was rife, they found some of our people sleeping in a toilet, being beaten by a policeman because he tried to find shelter at a train station. But because they were Aryas, inspired by Maharishi Dayananda to fight for social justice, they couldn't see this happening. So they got into a meeting the next day and decided that no person who is looking for a home to sleep shall sleep in a toilet or in undignified circumstances. And thus the Arya Anahat Ashram was founded. Today, this institution is one of the largest in the Southern Hemisphere, caring not only for over 800 seniors and elders, those who are unable to care for themselves at the last tender age of their life, but also takes care of our children who have no parents, our orphans, that need love, that need care, that need direction in life, that need education, access to education. Our women who are abused at their home due to domestic violence have no place to go. We have a home for them at the campus of the Aryan Benevolent Home. This institution is thriving and is based in Chatsworth and continues to care for our aged, for our children and abused women. Subsidies are not only given by the Department of Social Development, but also sponsored by the community of South Africa. The Arya Samaj continues to pioneer and find innovative ways to ensure that the home and its services grow from strength to strength. Every year, we have a message of inspiration from Amitabh Bachchan ji, who came to South Africa many, many years ago and was so inspired by the work of the Aryan Benevolent Home that every year when we have our main fundraising drive, he sends us a message of support so that South Africans can remember that it is our beholden duty, as taught by Maharishi Dayananda ji, to serve particularly our elderly and then our children and women. Just as a brief also on South Africa, part of why the Arya Samaj thrived in South Africa. When the Arya Samaj was formed in 1875, many of the Indians in 1860 were brought from Bihar state, UP state and Chennai to South Africa to cultivate the sugarcane plantations. We came here, our Arya missionary is the first one being Bhai Parmanand ji, came to South Africa
saw the conditions of our people, and brought the light of knowledge, wisdom, and courage as taught by the Arya Samaj. With that inspiration, Arya Samaj grew so much so that today we are free because Arya Samaj was part of the struggle in liberating our people and continues today to ensure that we work towards social cohesion of every race, every language, every culture in South Africa, because as Acharyaji said, Manur Bhavajanaya Divyam Janam, oh man, be human, and create a society of divine enlightened people across the board, no matter the language, no matter the religion. Vedas is for all. And we continue through our projects, serving without that discrimination, teach our people that the Arya Samaj philosophy is truly open to every human being. It is their birthright because Vedas is knowledge, knowledge for all. I'll pass over to Bhuvnesh ji. हिंदी में बोलता हूँ और आपको अगर बीच में इंग्लिश निकल आए तो कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बोलता हूँ। देखिए, आर्य समाज की मूवमेंट अच्छे से डिस्क्राइब कर दी स्वामी जी ने, और आर्य समाज की जो भूमिका रही है वो इसके इंसेप्शन से जब से स्टार्ट हुआ है, इट इज़ नॉट जस्ट प्रेयर एंड संडे सत्संग ओनली, वी वर्क ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमैनिटी। और हिंदी में बोलूँ तो हमारे वेदों का जो मूल है मनुर्भव, कि मनुष्य बनो, और इसी के अंतर्गत मानव सेवा हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा है। क्योंकि जब हमारा उद्देश्य मनुर्भव है, मनुष्य बनने का है, तो मनुष्य बनने के प्रोसेस में जो जो बाधा आती है, वेदर इट्स सोशल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, अनएजुकेशन, या फिर जो भी डोगमास हैं, जो भी इलॉजिकल प्रिवेलिंग धर्म है, चाहे उसको क्रिटिसाइज करना पड़े, आर्य समाज और आर्य समाज के मूवमेंट ने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, उसने उस क्षेत्र में काम किया। ऑस्ट्रेलिया में भी ये शुरू हुआ था 24-25 साल पहले। फिजी के जो लोग थे, यहाँ से आर्य समाज फिजी गया, और फिजी के माध्यम से जब वहाँ कू हुआ तो वहाँ जो फिजी इंडियंस रहते थे, उन्होंने फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब हम मूवमेंट हुआ तो वहाँ से आर्य समाज ऑस्ट्रेलिया में आया। और गुड टू नो कि उन्होंने अपनी हिंदी को, क्योंकि हिंदी भाषा नहीं है, वो साथ साथ कल्चर भी लेके चलती है, उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। वहाँ पर ऑफकोर्स जो प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी की कहीं भी हो सकती है, वो वहाँ पर भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी। जो लोकल एबॉरिजिनल हैं, उनके बीच में काम करना, उनको डिग्निफाई करना, उनको जो आइडेंटिटी क्राइसिस दे दिया अंग्रेजों के अधिग्रहण ने वहाँ पर, उसको अपलिफ्ट करने वाले आर्य समाज के लोग। एबॉरिजिनल्स के बीच में काम करके उनको ये बताना कि आपके रूट्स किस तरह से इंडिया की कल्चर से, इंडिया की संस्कृति से जुड़ते हैं, उसको काम हमने किया। देश में रहने वाले जितने भी लोग आते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन विच माइग्रेट्स, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो यहाँ की जो कल्चर है उसको साथ लेके जाना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान आर्य समाज का है। उसके साथ साथ सेकंड प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम इंडिया वुड बी कि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको अपनी कल्चर और कल्चर के रूट से कैसे जोड़ते हैं। क्योंकि आर्य समाज के पास सिद्धांत है वेद का, और वेद का मतलब बैक टू वेदास। ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म को वेस्टर्न थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा, उन्होंने सोचा है बैक टू वेदास जाकर, कि हमारे मूल में, क्योंकि क्या होता है, मैं अपने घर को सुधारना चाहता हूँ लेकिन आपकी सोच से सुधारना चाहता हूँ, मैं कभी नहीं सुधार पाऊंगा। और अगर आप आज देखिए तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जितने भी रिफॉर्म कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी, और उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि भारत की संस्कृति क्या है, वेस्टर्न थिंकर से प्रभावित होकर नहीं, भारतीय सोच और भारत की संस्कृति क्या कहती है उस रिफॉर्म के बारे में, उसको लेकर वो चलते हैं। और यही काम प्रधानमंत्री से पूर्व हमारी आर्य समाज ने किया, और वो 150 वर्ष तक लगातार करती रही। तो मैंने जैसे बताया कि माइग्रेटेड फैमिलीज का पहला प्रॉब्लम होता है कि उनको अपनी कल्चर से जुड़े रहने की इच्छा रहती है, साथ में आने वाली जो जनरेशन है उसको, तो उसमें लैंग्वेज, द कल्चर, अपने रूट्स, उनसे जोड़े रखने का काम आर्य समाज करता है। Again, social reform becomes different in each and every different country because geopolitical situation can be different, which means वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, वो चाहे ड्रग्स की हो,
चाहे वो आइडेंटिटी क्राइसिस की हो, चाहे कल्चर शॉक की हो, क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको कल्चर शॉक लगता है. द सेकंड जनरेशन थिंक अबाउट कि मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है वो अलग है और मेरी जो कल्चर है वो अलग है. वो अपने आप को कहीं नहीं तो पाता और उसको अपने और इसका जो अफेक्ट पड़ता है वो उसके अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप से पड़ता है. Because second generation think that our culture is very low and their mainstream is high. उसको जोड़ने का काम हमारे संडे के सत्संग करते हैं, हमारे यूथ फोरम करते हैं, हम लगातार सम्मेलन करते हैं, हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जो भारत से भी जुड़ा हुआ है. और हम अभी भुवनेश जी से बात कर रहे थे कि हम यूनाइटेड स्टेट से भी हम अपनी यूथ एक्सचेंज करेंगे ताकि उनको लगे कि आर्य समाज इज नॉट लिमिटेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी ओनली एंड दिस इज द कोर ऑफ दिस सम्मेलन. हम उनको दिखा पाए, देख पाए कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको भी पता चले कि आर्य समाज इज नॉट लिमिटेड टू सिडनी और ऑस्ट्रेलिया और यूएस. It is actually worldwide movement. More than 15,000 institutions are working day and night for the welfare of humanity. और एक बात और जो स्वामी जी ने मुझे आदेश दिया है एकदम से कि यूनाइटेड नेशन और का जो चार्टर है, अर्थात जो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन चार्टर है, ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, अगर आप उसको देखें तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी जो इंस्पिरेशन है वो वेदास से आई. क्योंकि जो हमारा वैदिक फिलॉसफी कहती है वो मनुर्भव की बात करती है और उसके राइट्स क्या है. वी डोंट बिलीव इन बर्थ बेस्ड क्लास, वी बेस इन, हम उसको क्या कहते हैं, कर्म से कोई ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा. तो जो हमारे लॉजिक्स हैं, हमारा जो विजन है वो लॉजिक भी देता है और प्रोग्रेसिव भी होता है. तो इस दृष्टि से मेरे को लगता है कि जो आर्य समाज की मूवमेंट है वो मनुष्य के अधिकारों की बात करता है और उसके माध्यम से मनुष्य की सेवा करने की बात करता है. So it's a human rights which is very much aligned with the human rights charter. And I was actually presenting that and comparison कि देखा जाए कि वो जो आज एक ब्रॉडर लेवल पे एक्सेप्टेंस है जिस ह्यूमन राइट्स की, उसके रूट्स कहाँ पर है, उसके रूट्स हमारे वेदास में. और अगर हम वहाँ पे इंस्पिरेशन लें then we get to know कि ह्यूमन राइट्स का चार्टर उनके पास आज है लेकिन हमारे पास सदियों से था, है और रहेगा. और इसीलिए आर्य समाज क्योंकि उसको लेके साथ में चलता है, वेदास को लेके साथ में चलता है, इसलिए वो रेलिवेंट था, रेलिवेंट है और रेलिवेंट रहेगा. थैंक यू. Namaste, good afternoon. I am Kiran Sadhguru, Pandit Kiran Sadhguru, President of Arya Samaj South Africa, or Arya Prithni Samaj South Africa. We are 100 years old this year, but our affiliates, the oldest affiliate that we have is 116 years old. We are concentrated throughout South Africa. The main center is based in KwaZulu-Natal, Durban, which is our headquarters. From there, we move out to the different parts of South Africa. We are centered in the Midlands region of KwaZulu-Natal. We've gone as far as Gauteng, which is the business hub of South Africa, moved through to the southern part of Africa, which is Cape Town. We have a chapter there. So we are centered in different parts of the country. Historically, Arya Samaj has been responsible for language upliftment. We've had a historical perspective in terms of maintaining and running many Hindi schools. In fact, the radio station, the Hindi Shiksha Sangh is running, was co-created by the Arya Samaj South Africa. We have we are involved in the creation of one of the largest ashrams and old age homes in the southern hemisphere, and that is the Aryan Benevolent Home in Durban. And we have an orphanage that is there, which houses over 90 people, 90 youngsters, and we also have another orphanage in Pietermaritzburg, which is run by different committees, but originally started and they are now subsidized by the state. When it comes to present day activities, we are very, very well linked to the political situation in South Africa. We work with the current government for various and many projects, social upliftment programs like gender-based violence, 16 days of activism. All of these things we participate in. We've just set up and we are setting up different chairs to deal with social upliftment programs.
as I said, with gender-based violence. As part of our education program, we have the School of Vedic Studies, which is based on the ancient sanskar system, but also to train our priests in a very formal 4-year program where they qualify as Vedic priests and go out to do work in the community. But as part of that, what is important, that we also train them to deal with the current day issues of drug addiction, also counseling of young couples, post-marital counseling, so that takes place. But I think we are also unique in South Africa, not even in India this happens. In South Africa, we've got Hindu chaplains, Hindu priests that are working in the defense force, and they service the needs of our soldiers, and we also have the servicing of needs of prisoners in different parts of KwaZulu-Natal, that's in Durban, and in Pietermaritzburg. So our Vedic priests are enrolled and they go out to do rehabilitation work. But I think the important one is where we also have Hindu priests that services the needs of our soldiers that are on the ground. I was one of them. So when it comes to current day issues and relating to India, we look up to the Sarvadeshik Arya Samaj for guidance, for guidance and for support. And we also at the same time, we are involved in education in terms of running programs in conjunction with India, that is with Sanskrit